will define roasting. Okay. In this process, the ore is converted into oxide by heating in presence of excess air. Ore is heated below melting point in order to remove the volatile impurities. If we will heat above melting point, the metal will melt and it is not easy to extract the metal. ये रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग ना मेल्टिंग पॉइंट के से कम तक हीट करते हैं ओर को, और उससे वोलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाता है और वो ऑक्साइड वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसमें जनरली सल्फाइड ओर यूज करते हैं और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, roasting process is generally applied to sulfide minerals. First of all, we will take ore concentrate. That means the ore has been partially purified by the various methods such as froth flotation. Now, ore concentrate is heated with hot air. It is done in reverberatory furnace. We will see reverberatory furnace in next slide. During roasting, the sulfide ore is converted to an oxide and sulfur dioxide is released. We can use this sulfur dioxide in various industrial processes such as contact process for manufacturing of sulfuric acid. Metal oxide we get that is in solid state. Due to excessive heat, the roasted ore becomes porous and dry. Impurities like sulfur converted to sulfur dioxide, arsenic converted to arsenic oxide, phosphor converted to phosphorus pentoxide. तो रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग जनरली एयर रिच्ड ऑक्सीजन को ओर को मतलब हीट करते हैं रिवर्बरेटिव फर्नेस में। इससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के कारण वो ओर का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें ZnS है, उसमें ये रिएक्शन है 2ZnH प्लस 3O2 गिव्स 2ZnO प्लस 2SO2। एक्सेसिव हीट के कारण ये ऑक्सीडाइज होकर ZnO बन गया और इसमें जो इम्प्योरिटीज था जैसे सल्फर था तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, we will now in this slide we will see the furnace used in the roasting process. The major part of reverberative furnace are firebox, so hearth, chimney. So firebox, in firebox the fuel is burned to provide heat. A fuel can be coke or anything that can be act as for fuel that can provide such amount of heat. Hearth. In this portion, the ore is kept and ore is not in direct contact with heat. Ore is heated by the hot gases and next chimney. In chimney, the outlet gases are released. In the extraction of zinc blende, first of all, take the concentrated ore to the hearth due to excessive heat. In presence of oxygen, the sulfide ore oxidizes into lead oxide and the sulfur dioxide goes out. तो जिंक ब्लेंड का प्रोसेस हम लोग रिवर्बरेटिव फर्नेस में करते हैं। तो तो इसका 3 मेजर पार्ट होता है। एक ये हो गया फायर बॉक्स जहां पे हम लोग आग लगाते हैं जो कि कोक से लगाएं, और यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट आग का फ्लेम से डायरेक्ट हर्थ में रखा हुआ ओर को नहीं होता है, इसको इनडायरेक्टली कांटेक्ट में रखते हैं। यहाँ हॉट गैसेस के कारण ये हर्थ में रखा हुआ और ऑक्सीडाइज होने लगता है। और फिर ये आउटलेट है चिमनी, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब आउटलेट गैसेज निकल सकता है। और सल्फर डाइऑक्साइड मेन इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग इसको यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है। ओके ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर अफेक्टिंग रोस्टिंग। we are having several factors that affect roasting, that time, availability of oxygen in air, temperature, physical condition of ore, nature of mechanical device used. So availability of oxygen, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में होगा तो ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। और फिजिकल कंडीशन ऑफ ओर, और उसको ओर को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया गया हो, जैसे कि फ्रोथ फ्लोटेशन में हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं और वो फ्रोथ के माध्यम से वो जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाता है और हम लोग सल्फाइड ओर को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। और मैकेनिकल डिवाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग ईंट का रिवर्बरेटिव फर्नेस तो पहले ईंट का रहता था, अभी थोड़ा एडवांस मटेरियल का बनने लगा है, तो उससे मैकेनिकल डिवाइस को यूज करने से मतलब अच्छा रहता है रोस्टिंग। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी विल सी कैल्सिनेशन।
It is the thermal treatment process in the absence of limited supply of air or oxygen. Generally, in this process, we convert the hydrated salt or metal carbonate to metallic oxide. Due to high temperature, the volatile impurities removes out and make the ore porous. Calcination कैल्सिनेशन प्रोसेस में जैसे कि हम लोग ये एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं तो ये जनरली ये कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया जाता है तो कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं तो जनरली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CCO2 बनता है तो सी ए कैल्शियम ऑक्साइड को बहुत सारा एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री में यूज किया जा सकता है इसे तो moving to next slide. Calcination of limestone. Calcination is used to decompose calcium carbonate to get calcium oxide and carbon dioxide. Reaction is generally endothermic and consume large amount of thermal energy that comes from burning of coke. Fluxing of iron ore and calcium and calcination of limestone outside the blast furnace is preferred to avoid extra consumption of coal जैसे कि कैल्सिनेशन के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है तो कोक का यूज करते हैं बर्निंग ऑफ कोक से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये थर्मली डिकम्पोज होता है CaO प्लस CO2 में ओके नाउ वी विल सी कैल्सिनेशन प्रोसेस बाय रोटेटरी किल कैल्सिनेशन Using rotatory kiln, the calcination of limestone is carried out. Due to excessive heat, the calcium carbonate decomposes into calcium oxide and CO2 released, as we had seen in previous slide. As rotatory kiln rotates, the reaction proceeds. This help in the thermal decomposition. Here, rotatory kiln का इस्तेमाल किया जाता है thermal decomposition of is calcium carbonate. Okay. Now, after this slide, Rachel will proceed.